Good morning, students. Today we will do the topic respiration of lesson number 6, life processes of class 10. This video is made for those who are not able to understand the respiration earlier. So I hope from this video you will be able to get it. Now first of all, what is the definition of respiration? What is respiration? Respiration is the process in which the food that we eat is broken down to release energy. जो हम खाना खाते हैं, जो हमने न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ा था अर्लियर, उससे हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स दैट वी टेक इन फूड, इट गेट्स डाइजेस्टेड and then it is absorbed by the blood and the waste products are eliminated from our body. Now what includes in respiration? In respiration, it is the how the energy is released from the food. It is by the oxidation of food, means with the help of oxygen the food is broken down to release energy. This is the process of respiration. Food, when combines with oxygen, it gives carbon dioxide and water and it releases energy. Now what are the steps that undergoes in respiration? क्या क्या step होते हैं? It involves gaseous exchange, that is breathing. पहला स्टेप होता है गैशियस एक्सचेंज का, जिसको हम सिंपल ब्रीदिंग कहते हैं. नाउ द पीपल ऑफन कंफ्यूज ब्रीदिंग विद रेस्पिरेशन, बट बोथ ऑफ देम आर द डिफरेंट प्रोसेसेस. ब्रीदिंग इज जस्ट सिंपली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ये सिंपल इतना सा प्रोसेस ब्रीदिंग होता है, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं. ब्रीदिंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उससे ब्रीदिंग को कोई मतलब नहीं है. ब्रीदिंग में सिर्फ जो हम ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल आउट कर रहे हैं, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस. सो वी कैन से ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है दैट इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है, सेल्स के बाहर हो रहा है. बट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे फूड का, तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन है तो इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इन ब्रीदिंग नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एंड इट अकर्स इनसाइड द सेल्स. अब नेक्स्ट प्रोसेस यही है हमारा. नेक्स्ट क्या है इसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन. गैसियस एक्सचेंज होता है. दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. अब हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस था, इन डाइजेशन ऑल्सो व्हाट हैपन्स? ब्रेकडाउन ऑफ फूड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? हियर ऑल्सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स. द डिफरेंस इज इन डाइजेशन the food is broken down and the nutrients are absorbed by the blood. But in respiration the food is broken down and that food goes to the cells through the blood to give energy, to release energy. That is the process of respiration. And as it is undergoing in the cells, ये जो respiration का process है ये cells के अंदर होता है. That is why it is also called the cellular respiration. Now coming to the types of respiration, there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. This we have studied in junior classes also. Aerobic means with the involvement of oxygen. So the respiration which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and respiration which occurs in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration. अब ये जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन cytoplasm. This we will study in detail here in the glucose breakdown of glucose by the different pathways. और क्या डिफरेंस हो सकते हैं? Yes, the energy which is released in aerobic respiration is much higher as compared to the energy released in anaerobic respiration. Why? Because aerobic respiration में ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, तो फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए. मीन्स प्रॉपर फूड का ऑक्सीडेशन होता है. बट हेयर एज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. दैट्स वाई इट रिलीजेज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी.
So this is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Now coming to here, these are the various pathways of glucose breakdown. Glucose breakdown के various pathways हैं. There are 3 ways by which glucose is broken down. फर्स्ट 2 तो हमने यहाँ स्टडी करा है एरोबिक और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. जो फर्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, सेकंड होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एंड थर्ड टाइप ऑल्सो कम्स अंडर अनाएरोबिक रेस्पिरेशन which is in lack of oxygen, means जब ऑक्सीजन होती है but it is not in the sufficient quantity that is required. lack of oxygen जब होता है. So first step in these 3 pathways is common. First step common है तीनों pathways में, that is the glycolysis. Glycolysis क्या होता है? It is the conversion of glucose into pyruvate. तो सबसे पहले जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कोई भी स्टेप हो, कोई भी पाथवे हो, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन टू द पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. पायरुवेट में ब्रोकन डाउन होता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एंड दिस कन्वर्जन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. So if the definition comes, what is glycolysis? Glycolysis is the conversion of glucose, which is a 6 carbon molecule, into the pyruvate, which is a 3 carbon molecule. तो ये कॉमन स्टेप है तीनों पाथवे में. सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर एनर्जी रिलीज करता है बाय डिफरेंट स्टेप्स. तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन. इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? इट इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी विच इज वेरी वेरी हाई. सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट जब हुआ तो पायरुवेट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. सेकेंड पाथवे है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये कहाँ होती है? हमारी ईस्ट में होती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. व्हाट हैपेंस इन फर्मेंटेशन? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज. बट हेयर एनर्जी रिलीज इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द एरोबिक रेस्पिरेशन. थर्ड पाथवे होता है इन अवर मसल सेल्स. वी हैव सीन दैट व्हेन वी डू वेरी विग्रस एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं तो अवर मसल्स स्टार्ट पेनिंग. हमारे हाथों में, पैरों में दर्द होने लगता है. Why? Due to accumulation of lactic acid. लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, हमारे लैक्टिक एसिड से क्या होता है? मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं और हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, तो जो ऑक्सीडेशन है फूड का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी नहीं मिलती है हमारे सेल्स को. तो उस वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और जिससे हमारी मसल्स जो हैं वो पेन करने लगती हैं. सो व्हाट हैपेंस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन? Glucose is converted into lactic acid plus energy. And where does it occurs? It occurs in muscle cells. So this is the general overview of respiration. डेफिनेशन हमने देखी. इसमें डेफिनेशन क्या होती है रेस्पिरेशन की, क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या होता है रेस्पिरेशन में. देन वी हैव कवर्ड द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. देन वी हैव सीन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट हाउ द रेस्पिरेशन अकर्स इन human beings and plants, as well as we will discuss about the differences between respiration and breathing, respiration and photosynthesis, that we will discuss in the next video. Thank you.